Children, hope you can see this PPT presentation. Put thumbs up if it is yes, now visible. Now moving on to the part 5, today's topic. We are going to learn exercise 4.1 questions. Coming to the question number 1. Use the figure to name 5 points, a line, 4 rays, and 5 line segments. Here in this given figure, the points are, what are the points present in this? Points are O, B, C, D, E. So 5 points are B, C, O, E, and D. Here, what are the lines we have? You know, a line supposed to have both end points. There must be an end point for both the sides, which means line can be extendable in both the directions. If you see this one, it has only one direction, the possibility of extension. The other is end point it is. Even here also you could find similarly. So let me say this is extended in only one direction. So having O as endpoint, it is not a line, it's a ray. Even OA is a ray as well as OC is a ray. Now I have only one line. That's why he said a line, which means there is a singular. So what would be the name of that line? The name of that line can be, we can call DB line, or it can be called with any 2 letters, because point D is on that, O is on that, E is on that, and B is on that. Out of 4 points which are lying on this line, you can name using any 2. Okay? Children, you need to understand, to name a line, we need only 2 points lying on it to be taken. Either you can call it as EO line or OB line, or you can name DO line. There are many ways you can name it using these 4 points. Now, coming to the 4 rays. What are the 4 rays? You know, if you want to say 4 rays present in this, watch the direction in which it is moving. Here, in this direction, I have 2 points D and E, and O is like a junction where ray OA, OC, OB, and OE, or you can call OD. Any one name we can take. So all these 4 rays are meeting at this junction O. It looks like that. So I say ray OB. Sorry, here let me use only letter, 2 letters we have to use. So ray OA, ray OB, ray OC, and ray OD. I have ray OD, either calling it as ray OE. We have totally 4 rays. Then moving on to the 5 line segments. So for that 5 line segments, I am not given A.
I have to use only these 5 points. So line segments are DE is a one line segment. Next, EO is another line segment. OB is one line segment. We have on that only, we have next DO, one more line segment. DB, one more line segment. So on this line itself, I have got DE, EB, OB, and DO, DB, and even EB is one more line segment. So totally, using these points D, E, O, and B, 4 points, we can name definitely 5 line segments and more than that. Then participants, some participants are I think, what is your doubt? Pritham, I am unmuting. Yeah. What is your doubt, Pritham? Now tell me, what is your doubt? Srinivas? Tell me. Okay, OA ray, A by taking that point I got. Okay. You are right. In that given figure, there is no A point. You can name OE ray or OD ray. Both are of same. Hena. Totally we have got 4 rays. Can DE doesn't form a ray. DE is a line segment. Ray should have one endpoint and another direction it must be moving. Okay. ED, ED can be said. ED can be said. ED can be said. Okay. So we can have calling ED array. We can call it. Okay. Having this portion alone taken. ED is a array. It can be called as ED ray. Yes, we can ray. ED is a ray. But we cannot call DE. DE is wrong. Okay. Yeah. Then moving on to the next question number 2. Question number 2. Now, question number 2. Name the line given in all possible, that is, in how many possible ways are there? 12 possible ways are there. Choosing only 2 letters at a time from the given 4 letters. So, what are all the ways that we can name? We can call it as a line AB. Okay. And with the letter A, you can say line AC. As the first letter A, I can call it as line AD. Then we can call line BC. We can call line BD. Then we can call line CD. Okay, these are the 6 possible ways, but he says 12 ways. How means I can call
either line AB or line BA, or I can call CA line instead of AC. We can call DA line instead of AD. We can call CB line instead of BC. We can call DB line instead of BD, and we can call DC line instead of CD. So here this possibility is 6, and if I alternate the letter, interchange the letter A to B, B to A, we get another 6 possible ways. Okay? Total I have 12 possible ways of naming this line on which I have got 4 points. Using 4 points, I can name this line as 12 ways. Line AB or BA, line AC or CA, line AD or DA, line BC or CB, line BD or DB, line CD or DC. Total 12 ways. If it is clear now to you all? Yeah, put a thumbs up if it is clear. That's don't talk. Yeah, let's move on to the question number 3. Question number 3. See the figure. Using this figure, you have to name line containing point E. Means you have to tell a point on which point E is there. कौन सी लाइन पर पॉइंट ई है करके उस लाइनों का नाम बताइए. ಯಾವ ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅನ್ನುವುದು ಇದೆ ಅದದ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಸರದಿಂದ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹೆಸರು 1 2 3 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಎಇ. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 12 ಹೆಸರದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ 12 ways that ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. Lane 1 has got 12 ways of naming it because the points are A, B, D, E on it. I can, yes. Or another line which has got E on it is EF line. EF line has got only 2 points on it, so it can be named in only one way. Okay. ಸೊ ಈ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು पॉइंट्स ಬಳಸ್ತಾ ಒಂದೇ ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. इस लाइन के ऊपर 2 ही पॉइंट होने के कारण से इस लाइन, लेट्स से इस लाइन का नाम 2, इस सेकंड लाइन को हम बस एक ही तरीका में नाम रख सकते हैं, वही लाइन EF. तो इस दोनों लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो ये 2 ही लाइन है, पॉइंट ई उनके ऊपर होने का जैसा रहने वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए. कौन सा लाइन ए लाइन ए मतलब ए लाइन कौन सी पॉइंट ए की थ्रू जा रहा है. सो विच लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए. ಯಾವ ಲೈನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಲೈನು, ಆ ಲೈನ್ ಹೆಸರು ಇದು 1, ಲೈನ್ 1. ನಿಮಗೆ 12 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನಾನಂತೂ ಲೈನ್ ಎ ಇ ಅಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಲೈನ್ ಎ ಇ ಅನ್ನೋದು 12 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ ಅದರ ಮೇಲೆ. सेकंड क्वेश्चन बताता है इस लाइन के ऊपर 4 पॉइंट है, तो 12 तरीके में उसका नाम रख सकते हैं. उस तरीका में किसी भी आप इस्तेमाल करिए नाम रखने के लिए. मैं तो बस यही लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए करके मैं बोलूंगा. अब सी का आंसर
लाइन ऑन विच वो लाइज, कौन सी लाइन के ऊपर पॉइंट वो है, ಯಾವ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಓ पॉइंट ಇದೆ. सो थर्ड लाइन के ऊपर पॉइंट ओ है, उसका नाम, इसका नाम भी सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है. उसके ऊपर हम किसी दो लेटर्स के इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं. लाइन सी ओ हैज द पॉइंट ओ ऑन इट. इसका मतलब सीओ के लाइन के ऊपर पॉइंट वो है करके आंसर लिख देंगे. और डी का बारे में पढ़ेंगे. पहला, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. यहाँ पे कौन सा लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. देखो, लाइन 1 लाइन 2 से पॉइंट ई के जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई. सो लाइन 1 और लाइन 2 का नाम बताने से एक पेयर बन जाएगा. ओके, सो ई एफ लाइन and AE line are intersecting at the point E. इसका मतलब लाइन AE और लाइन EF दोनों पॉइंट E की जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है. तो लाइन EF and लाइन AE are intersecting at the point E ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ EF ಲೈನ್ ಮತ್ತು AE ಲೈನ್ पॉइंट E ಹತ್ತಿರ इंटरसेक्ट ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. नेक्स्ट, सेकेंड, कौन सा लाइन, लाइन 2 और लाइन 1 का हो गया. लाइन 3 और लाइन 1 का बारे में देखो, ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट के बीच, वही पॉइंट बी के जगह पे. तो इस दोनों पॉइंट बी के पास इंटरसेक्ट हो रहा है, उसका बारे में बताएंगे. लाइन ए एंड लाइन CO are intersecting at the point B. तो हमारे लिए दो पेयर, टू पेयर्स, एक पेयर ए बन गया और एक पेयर ए बन गया. सो दोनों पेयर पॉइंट ई और पॉइंट बी के जगह पे इंटरसेक्ट होने का हम बता दिए हैं. ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. मान लीजिए आपको एक पॉइंट है, उस पॉइंट थ्रू कितना लाइन को आप खींच सकते हैं. ओके, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रा थ्रू वन पॉइंट. ओके, infinitely many. Kumar, you are right. Okay, Pritam, perfect. There are infinitely many lines we can draw passing through. ओके, देखिए मैं यहाँ पे खींचूंगा, विल ड्रा. ये चल रहा है, ये भी चल रहा है इसके थ्रू. और एक, आप कितना ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए infinitely many lines you can draw. Okay, through one point
You can draw infinitely many number of lines. Okay, then what about next question? What about next question? मानो आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट हो गया ये, और एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, पॉइंट बी। इस दोनों के थ्रू कितने पॉइंट्स जाएंगे, कितने लाइंस जाएंगे? करेक्ट करेक्ट, ओमकार, वेरी गुड, राइट आंसर। तो जब हम लाइंस बनाते हैं, उस लाइन एनोटेशन करने में बहुत दिक्कत हो रहा है इधर। ओके, एक खींचने के लिए तो नहीं हो रहा है, चारों पॉइंट लगाना है। ओके, आगे हो गया। जा रहा है अब, करेक्ट? ये तो गलत था, डिलीट कर दे रहा हूं। लेट मी डिलीट इट, डिलीट इट, बस। एक ही लाइन जा रहा है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए और बी, डन। तो वी कैन ड्रा passing through 2 points, one and only one line, but passing through one point, infinitely many lines can be drawn. Is it clear, children, now? Yeah. Now let's move on to the next question, number 5. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. You have to draw line segment AB. तो लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करके फिर उसके बाद क्या करने, इसके ऊपर पॉइंट पी रहने का जैसा दिखाना है। तो you have to show a point P lying on it, drawing a line segment AB. ये रफ फिगर में ड्रा कर दिया। You have to draw like this for the first one, और सेकेंड वन के रीड करूंगा, और बाकी सही और डी आपको होमवर्क जैसा दे दूंगा। क्या करना है सेकेंड वन में, एक्स वाई लाइन खींचना है। मानो एक्स वाई लाइन खींचे हम, और ये तो लाइन का जैसा नहीं दिख रहा है, एनोटेशन करना पड़ेगा। ओके, वो उससे बेहतर टाइम लग जाएगा करके मैं ऐसे ड्रा कर दिया। और लाइन पी क्यू को खींचना है, लाइन पी क्यू को खींचा हूं यहाँ पे। मानो यहाँ पे लाइन पी और लाइन क्यू, इस दोनों लाइन पॉइंट एम का जगह पे इंटरसेक्ट होना है। तो ये रफ फिगर सेकंड के लिए। ओके, आप लाइन का जैसा खींचे, मैं खींच नहीं पाया, आई एम जस्ट राइटिंग विद द हेल्प ऑफ माउस एंड ऑल, इट्स वेरी टफ। ओके,
तो ये दोनों होमवर्क, सी और डी आपके लिए होमवर्क. देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. एनोटेशन मैंने लो नहीं कर रहा हूं बेटा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. पढ़ो एक क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन. ये लाइन एम एन के नाम पर बताया. इसका नाम तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स है, तो 12 के ऊपर ही होता है. We will tell in so many ways. Okay, 20 ways it can say. Yes, who said, yeah? How quickly? What is his number, name? Wow, Nikhil, how do you find that 20 ways? Oh, good, yeah. Nice. Right answer. Right answer. But it is said like this: 5p two ways, 5 into 4, 20 ways. It's actually permutation combination. Comes in class 11th. But you could quickly say 20 ways. I am surprised. Very good boy. So this line has got 5 points on it, which means I can name it in 20 ways. So say whether the following statements are true or not, or true or false, in context of the given figure. Q, M, O, N, P are on the points line MN. True or false? Very good. M, O, N are the points on the line MN. True. वो पॉइंट्स है उसके ऊपर. M and N are end points of the line segment. यहाँ पे इस दोनों के बीच में क्या फर्क है? ये देखो, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है. ओके, ये लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है. देखो, लाइन सेगमेंट जब बन गया तो एंड पॉइंट्स आ जाएगा. ट्रू. Now, O and N are end points of the line segment. Very good. False. It's a line segment. ये क्या बोल रहा है? OP का एंड पॉइंट्स, इस लाइन सेगमेंट OP का एंड पॉइंट्स O एंड N नहीं होगा ना. OP का एंड पॉइंट्स O और P होना है. तो ये फॉल्स है. गुड. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का कंटिन्यूएशन. M is one of the end point of QO. QO line segment. Correct. False. Q is one end point, O is an end point. So he says M. It is false. M is a point on the ray OP. OP कहाँ पे है? ये है रे OP. ये रे OP के ऊपर M. False. क्योंकि वो उस डायरेक्शन में नहीं है, उस रास्ते में नहीं है. इट इज नॉट इन द रे ऑफ, इट इज नॉट इन द पाथ ऑफ दैट रे. ओके, इट्स फॉल्स. इट इज इन द ऑपोजिट पाथ. वो क्यू पाथ पे है. रे ओपी, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी. रे ओपी और रे क्यूपी, यस, दे आर डिफरेंट. क्योंकि रे ओपी का स्टार्टिंग पॉइंट वो है, रे क्यूपी का स्टार्टिंग पॉइंट क्यू है. हाँ, तो दोनों एक ही नहीं है. They are different. So true. They are different. Yes, they are different. Fail. It is true. Yes, they are different. QP ray is longer one. OP ray is shorter one. Though OP ray is on QP ray, they are different. Okay. मालूम हुआ? Next. Continuation of the question number 6.
Ray OP is same as Ray OM. Ray OP same as Ray OM. False. Next. Ray OM not opposite to Ray OP. Ray OP, Ray OM. See, if you are northing, it is south. Correct? Opposite, no? It is false. Don't shout, Atharva. O is not an initial point of OP. O is initial, then only we have written first letter. It is again false. N is the initial point of NP and NM. It is true. So it is initial point only. Okay. Initial point, or it is also called a starting point. Okay. Initial point, initial, starting, both are same. Okay. Then, so with this, we have completed today's class. Okay, children. Homework for you is, I have given only simple question. Question number 5, C or D, you have to draw rough figures and label. Okay. In the question number 5, only C and D you have to draw it. Okay. I have drawn A, I have drawn B. I have drawn A and I have drawn B. You have to draw for C and D. Only 2 questions, simple questions. That is the homework. I will not send any homework. See, I will send only in WhatsApp the homework. I will not send anything other than that. No notes and all. Okay, children? I told you very much clearly. I will not give any sort of notes. Notes you have to write it, children. That should be the habit which you have to develop. वही तो मैं डाल रहा हूँ, होमवर्क को डाल रहा हूँ. हाँ बताइए. ಏನಪ್ಪಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಏನು ಡೌಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ? हाँ हाँ, मैं डाला हूँ देखो. मैं एक बात बताऊं, इस लाइन के लिए नाम 20 का 20 विधा ways में we can name it. Okay, it has a 20 ways of naming that line. Why? Because there are 5 points on it. You are very much clear with the question number 2, right? This question clearly tells you there are 4 points on this line and we can name it in 12 ways. Obviously, in question number 6, there are 5 points on it and it can be named in many ways, more than 12 ways. And one boy clearly said 20 ways. That is true. Okay. If you start naming it, you can name it like a QM, QO, QN, QP, or MQ, OQ, NQ, PQ. So its line MN can be named in many ways. MO, OM, MN, NE, NM. ಪ್ರತಿಮ್ ಆ ಅದರ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ QMONP ಆರ್ ದೇರ್ ನಾ?
ಹಾ, ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅಚ್ಚಾ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್. ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? 1 to 6 ಅಲ್ಲ ಪಿ, 5th ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ಆ 1 to 6 ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು. ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಚಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದು ಕ್ವಶನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು, ಅದೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Yes, you have to draw properly and you have to label them in the notebook. Okay, question and answer. Welcome. Take care. Bye, all of you.